have an ET Now Newsbreak confirmed a big boost for the real estate sector coming in Maharashtra. The state announces the new housing policy. Anurag Shah is joining us with all the details about this story that he has been tracking very carefully. Anurag, take it away. Big development related to housing and real estate sector in Maharashtra, and listed companies based out of Maharashtra as after 18 years, government of Maharashtra has announced new housing policy, and this new policy has been named as Majha Ghar Majha Adhikar, that is my home, my right. Under this new policy, 70,000 crores of investments are planned, and a major focus will be on affordable housing, slum rehabilitation, redevelopment projects. Incentives will be given for the public-private partnership projects, land bank rationalization under the new policy. Premium rationalization is also a part of focus, as in city of Mumbai, the major part of overall project is of a premium also, around 30 to 35% of cost goes into premium charges. So premium also been rationalized in a new housing policy, and there are incentives for rental housing project, there are incentives for student housing projects that has been mentioned by Chief Minister Devendra Fadnavis. So last housing policy was announced in year 2007, and after that lot of scenario has changed, and demand for housing and increased, and major demand is for the affordable housing for middle class, for LIG group, for MIG group. So considering all factors, new policy has been announced by Maharashtra government and got a cabinet approval today. So going ahead, government plan to give a single window clearance also for approvals related to the real estate projects also. So big development related to housing and real estate sector in Maharashtra. महाराष्ट्र में आज हमने नई हाउसिंग पॉलिसी लाई है। इस नई हाउसिंग पॉलिसी में सभी प्रकार के लोगों को घर मिले, इसका प्रावधान किया है। इसका टाइटल ही मेरा घर मेरा अधिकार, इस प्रकार का इसका टाइटल हमने रखा है, जिसमें चाहे वो इंक्लूसिव हाउसिंग हो, चाहे स्टूडेंट्स हाउसिंग हो, चाहे कामकाजी महिलाओं का हाउसिंग हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स का हाउसिंग हो, चाहे कामगारों का हाउसिंग हो, सब प्रकार के जितने घटक हैं इनका हमने विचार किया है। रेंटल हाउसिंग का भी विचार इसमें किया हुआ है। अलग अलग प्रकार से जो योजनाएं बंद पड़ी है उन योजनाओं का विचार भी इसमें किया है। रीडेवलपमेंट का भी विचार किया है। सेल्फ रीडेवलपमेंट का भी विचार इसमें किया हुआ है। लैंड बैंक्स तैयार करने का विचार किया हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग का विचार किया हुआ है। सस्टेनेबिलिटी लाने का विचार भी इसमें किया है। नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लाने का भी विचार इसमें किया हुआ है। ग्रामीण शहरी सभी प्रकार के हाउसिंग की नीड्स को ध्यान में रखते हुए इस धोरण को, इस पॉलिसी को तैयार किया गया है। This is the word coming in from Maharashtra CM Devendra Fadnavis on the intricacies of this policy. But Deven, want to get your